भाई लोगों, अभी हमें करना क्या है कि हमें इस पाइथन कोड के हिसाब से हमें एक दूसरी कंपनी ने कहा कि एपीआई बनाओ, तो इस हिसाब से हम स्पेक्स बना देंगे। ठीक है ना? फॉर अनदर कंपनी। तो करके देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं होता है। तो पहले तो क्या है कि स्पेसिफाई इन केस पार्टी सच as sundry data is asked then the group parent needs to be clarified and as by the XML। तो ये फील्ड्स जो हैं जो कि होंगी वो जैसे कि पाइथन कोड में वैसा चला जाएगा। है ना? नाउ the client to also specify the sales accounts। ठीक है, क्योंकि कौन सा सेल्स अकाउंट्स का और परचेज अकाउंट्स का होगा, एंड परचेज अकाउंट्स दैट आर इम्पैक्टेड इन द वाउचर। क्योंकि वाउचर कैन इम्पैक्ट मल्टीपल सेल्स अकाउंट्स एंड परचेज अकाउंट्स। ठीक है ना? तो वो भी इनको क्लियरली बताना पड़ेगा। है ना? नाउ द एक्सपेंस डिटेल्स, क्योंकि ये डिटेल्स पहले से करना पड़ेगा। द एक्सपेंस डिटेल्स एसोसिएटेड विद द वाउचर नीड टू बी स्पेसिफाइड बिफोर एंड। ये हम लोगों ने गलती की थी, बिकॉज दिस थिंग एंड द टोटल इनवॉइस अमाउंट कैलकुलेशन needs to be given by the client beforehand। ठीक है ना? जैसे कि फ्राइट एक्सपेंसेस, पैकेज एक्सपेंसेस, ठीक है ना, एक्सेट्रा। ये हो गया तुम्हारा। फिर रिगार्डिंग ड्यूटीज and taxes, the specific ledgers need to be pre-informed to the by the client, right? Okay. The client would arrange for clean data, clean and actual data, ठीक है ना, and not डर्टी डेटा। क्योंकि आपने पिछले वाले प्रोजेक्ट में क्या किया था, हमारे को इनिशियली डर्टी डेटा मिल गया था तो बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, बिकॉज एआई विल नॉट बी कोड, एआई विल नॉट बी एबल टू कोड। ठीक है ना? रिगार्डिंग आइटम्स, द क्लाइंट नीड्स टू स्पेसिफाई वेदर batch movements are there or not। ठीक है ना? अब in the sundry creditors and sundry debtors, the bill movements need to be pre-specified। तो इनका जो है इधर आ जाएगा, बैच का दिस थिंग दिस थिंग दिस थिंग दिस थिंग। तो ये जो है केवल जो है स्पेक जो है। नाउ these are the specs associated only with the, क्योंकि वो दिस थिंग है ना, सेल्स वाउचर्स, हैंडलिंग ऑफ इंसर्ट्स, updates and deletes। The client will provide a field for the same। ठीक है ना? तो इसके बेसिस पे फिर मैं एक सेल्स वाउचर का एंटर करके देखूंगा। है ना? And the action set in the XML request shall be appended based on the same। ठीक है ना?
अभी होगा। Then the next is going to be list all the fields to be input in the voucher based on the XML inputs in the voucher। एक मिनट मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरा कुछ मैसेज आया है कि नहीं आया, एक सेकंड, क्योंकि वो ये हुआ ना। अच्छा, ये हो जाएगा ना। XML inputs for the voucher. Now, for the frequency, we shall depend upon the task scheduler in client Windows machine। ठीक है ना। अभी इसको एक मिनट देख लें। अटैच्ड, अटैच एक्सेल शीट। ठीक है ना, तो ये एक्सेल शीट है इसकी। ऐड फोटोज एंड फाइल्स, ये डाउनलोड है। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। ठीक है ना। नाउ द क्लाइंट टू स्पेसिफाई whether the purchase order from ERP next is the sales order or purchase order or sales invoice within tally। ये भी देना पड़ेगा, राइट। Then masters, if the masters are to be input from ERP next, क्योंकि ERP next हो सकता है ना, then for stock items please specify UMs। ठीक है ना, UM which is alternate UM if any, correct, based on the given details and the Python file and the XLSX mapping document, please share a technical proposal। ठीक है ना। The commercials are as follows। अब यहाँ पे हम रोक देते हैं। ठीक है।